Okay, so today we will discuss what is or who is a director in Companies Act. तो आमे पढ़ले जे कंपनी कौन कंपनी केमिति तैयारी हुए कंपनी केमिति इनकॉर्पोरेट हुए who are the people behind bringing the company into existence, they are promoters. कंपनी रा मेमोरेंडम कौन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन था एसोसिएशन माने there are a group of people who are coming together, they are making an association, that association is called company. So memorandum means for whatever reason they are coming together, that is what memorandum is. And we also discussed about what is articles, that articles of association, it discusses about the functioning of the company, how the company is to function, who are going to be its officers. तो से विषय में डिस्कस कले बाकी प्रस्पेक्टस कौन पब्लिक केमती से मैंने टंका आनीपारे पब्लिक को केमती पेमेंट करेंगे देयर सेयर कौन कहार प्रायोरीटी थाए लोन केस रे जो लोन दे था देयर से इन केस ऑफ वाइंडिंग अप देयर priority, they are given priority and they are return money than equity shareholders. Then they are preferential share equity shareholders also. तो ये विषय सब हम डिस्कस कले आज ही डिस्कसन करवा कौन ना डायरेक्टर किए केते टाइप डायरेक्टर था लीगल पोजिशन अपॉइंटमेंट रिमूवल केमती हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन कॉन्स्टिट्यूशन पावर रिस्ट्रिक्शन ड्यूटीज लायबिलिटीज देन कंपनीज रा मीटिंग्स कौन कौन अच्छी जो मैंने अच्छा कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ मेंबर्स हूँ दे नीड टू मीट in order to discuss the future of the company, also discuss the past of the company as well as the present of the company. केमती कौन प्रेजेंट चलुची पास्ट कौन होती केमती आम से जिनसा चेंज कर फ्यूचर आम कौन करार अच्छी से एकाठी डिस्कसन करती तो यहाँ जनरल मीटिंग अच्छी एनुअल जनरल मीटिंग जोटा कहुए एजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सब अच्छी देन कंपनी रेजोल्यूशन कौन अच्छी ओके ये सब विषय में डिस्कसन करिए तो प्रथम हूँ डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2(3)(34). डायरेक्टर इज एनी पर्सन occupying the position of a director by whatever name called. They are professional men hired by company to direct its affairs. They are not servants of the company, they are rather the officers of a company. Okay, so they are the officers of a company माने तांकर कंपनी रे पोजीशन या होची जे कंपनी नो गोटे कोन they occupy a very important position and they manage the affairs of the company. That's why they are not the servants of the company, they are managing the affairs of a company. So director is a very important post. Now से कहला जे whatever name called, तो डायरेक्टर जे अच्छी तांको में भी गोटे जो भी नेम आम देके अपॉइंट कर जमी जनरली तुम जानी जो कंपनी सीईओ जो था सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दैट पर्सन काइंड ऑफ एक्ट्स एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी से सब जिनस मैनेज करे कंपनी जमी गूगल सीईओ अच्छा सुंदर पिचाई तो यू नो सी कंपनी हेड कंपनी सब जिनस मैनेज कर माइक्रोसॉफ्ट सीईओ भी अच्छा सत्य नडेला तो यू नो he is the face of the company, he is managing everything. तो डायरेक्टर हो जाए सही पर्सन. देन हो पोजिशन ऑफ द डायरेक्टर अंडर कंपनीज एक्ट कौन इन केस ऑफ द पोजिशन ऑफ ए डायरेक्टर हैज बीन साइटेड बाय ब्राउन एलजी इन द केस ऑफ इंपीरियल हाइड्रोपैथिक होटल को ब्लैकपूल वर्सेस हैम्सन. As a versatile position in a corporate body, directors are sometimes described as trustees, sometimes as agents, sometimes as managing partners. The director का role हो various. Sometimes they act as the trustees of the company. Although we have read कि एमाने ट्रस्टी नुहंती बट से गोटे डिस्क्राइब करिया को बुझे को डेफिनेशनटा कौन डेफिनेशन गोटे बुझे को गोटे जिनस थाए तो इन ऑर्डर टू मेक अस अंडरस्टैंड से कहते समटाइम्स दे एक्ट लाइक ए ट्रस्टी समटाइम्स
they act like a agent, sometimes they act as managing partners of the company. These expressions are from indicating point by which the directors are viewed in a particular circumstance. को circumstance केमती से काम करते. Directors are agents of the company. In case of Moriarty versus Regent's Garage Co., it was held that the director is not a servant of the company but a controller of the affairs of the company. Further, in the case of Ferguson versus Wilson, it was clearly recognized that the directors are the agents of a company in the eyes of the law. In the eyes of the law, कहीं ସେମାନେ डायरेक्टर जो मैंने कंपनी को जितना रिप्रेजेंट करते ना कहली सत्य नडेला हो सुंदर पिचाई हो they are coming and representing their company to us. That's how they act as the agent of the company. But आम law रे जो principal agent relation अच्छी ସେମାନେ पर से सही principal agent relation ने पूरा आसिबे नहीं but they kind of act like. Then कुछ directors are trustees of the company in Ramaswamy Iyer versus Brahmaya and Co. Madras High Court regarding their power of applying funds to the company and for the misuse of power, directors are liable as trustees and after their death, cause of action survives against their legal representative. Basically, director जेहेतु कंपनी फंड मैनेज करती तो जदि से मिसयूज करेंगे तो छाड़ी दि जावन ना तो इन दैट केस दे एक्ट एज द ट्रस्टी कहीं जो कहली ट्रस्ट और ट्रस्टी जो था से पोजिशन यह थाए इफ द ट्रस्टी मिसयूजेस द फंड्स ऑफ द कंपनी देन वी कैन गो आफ्टर द ट्रस्टी तांकु लायबल करते तांकु रिकवर कर इवन वी कैन गो अगेंस्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स आल्सो तो सी जिनस से कौन डायरेक्टर कैसे भी से आम कर देन कौन डायरेक्टर्स इट वाज स्टेटेड एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट द ब्रेन ऑफ द कंपनी तो डिफरेंट पोजिशन तांकर कंपनी रोचे से डायरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पोस्ट इन ए कंपनी जने डायरेक्टर तुमको अपॉइंट करा पड़ो बर्तमान बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जोटा था आम आगू पढ़ा बट देयर मस्ट बी ए डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आम आगू जस्ट देखा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन तो से कंपनी सब जिनस मैनेज करती अफेयर करती सो डायरेक्टर पोस्टा रहा नेसेसरी बाय लॉ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स करना एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स and it should be consisting of individuals as directors and not an artificial person. तो से कौन डायरेक्टर जोटा था डायरेक्टर यूजुअली इन आवर कंपनी लो तुमको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गोटे अपॉइंट करा पड़ो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी है मिनिमम 2 था इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी है मिनिमम 7 था यदि 1% कंपनी अच्छी तो जड़े हेल्ले चलो तो से जो डायरेक्टर आम जिनसा पढ़ुचे यहाँ क्यूमुलेटिवली इट्स अ कलेक्टिव पोस्ट मे बी इन कंपनी ला इन सम अदर कंट्री सिंगल डायरेक्टर प्राइवेट कंपनी में भी रही पारे पब्लिक कंपनी में भी रही पारे बट अंडर आवर कंपनी ला प्राइवेट हेल्ले भी मिनिमम 2 जन तुमको रहा दरकार देन होचे अपॉइंटमेंट बाय नॉमिनेशन when an agreement between the shareholders has been included in the articles that entitles every shareholder with more than 10% share to be appointed as director they can be nominated as director तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेंशन होता डायरेक्टर केमी अपॉइंट केमी ना जे कंपनी 10% अधिक शेयर होल्ड कर दे कैन बी नॉमिनेटेड टू बी ए डायरेक्टर डायरेक्ट हो नुहे नॉमिनेशन हम भोट हम देन हे अपॉइंटमेंट by voting of an individual. Appointment of a director is made by voting at the general meeting laid down under section 162 of the Companies Act. Appointment by proportional representation. As per section 162 रे voting कहला 163 रे कौन कहला articles of a company can enable the appointment of director through the system of voting by proportional representation. This system of voting is used to make effective minority votes. Proportional representation कौन तुम जानी थी ये जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होची दैट इज बाय मीन्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्ट वोटिंग होनी सेठू प्रोपोर्शनली सिलेक्शन ही कि जो आसुचंती एजेंट्स माने दे आर गिविंग द वोट से अनुसार तांका वोट को वेटेज दिया जाए से वेटेज अनुसार प्रेसिडेंट का इलेक्शनटा हुए देन होचे अपॉइंट बाय ट्राइब्यूनल होचे कोन कंपनीज लॉ ट्राइब्यूनल जो अछि कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल सेटा करिवे से पावर टू अपॉइंट डायरेक्टर्स देन आसला गोटे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पोस्ट गोटे थाए कंपनी डील्स विथ प्रोविजन्स ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सेक्शन ले डाउन एटलिस्ट 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एवरी लिस्टेड कंपनी कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आगे देखा रिमूवल केमती हे बाय शेयर होल्डर्स और कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और रेजिग्नेशन 3टा वे से रिमूव हे शेयर होल्डर मैंने किए तुम कंपनी शेयर किन यू आर द शेयर होल्डर
कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कोटा सीएलटी जोरा था एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल सब डिफरेंट स्टेट्स रे अच्छी कटक रेट ही हमरा अच्छी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इन सीडीए सतीचूरा पाखे अच्छी और से रेजिग्नेशन कर रिमूवल ऑफ बाय शेयर होल्डर कौन 169 दूसरी प्रोवाइड्स दैट द डायरेक्टर कैन बी रिमूव बाय द ऑफिस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ बाय ऑफिस मैंने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हेल्ले डायरेक्टर को शेयर होल्डर मैंने रिमूव करेंगे कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल केमती कर सेक्शन 242H application is made to the tribunal for relief from oppression and mismanagement से केस है CLT मैंने कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल देखिए करेंगे और रेजिग्नेशन अंडर सेक्शन 318 डायरेक्टर रिजाइन्स हिज ऑफिस इज नॉट एंटाइटल्ड टू कंपेंसेशन निजे रेजिग्नेशन कर कंपेंसेशन कौन दे देन रहा टाइप्स रोल्स पावर्स लायबिलिटीज ऑफ कंपनी डायरेक्टर्स इन इंडिया तो से कौन डायरेक्टर की ही पारे बिफोर एनीवन कैन टेक ऑन द रोल ऑफ ए डायरेक्टर इन द कंपनी दे मस्ट मीट सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आउटलाइन इन द कंपनीज एक्ट दिस रिक्वायरमेंट एंश्योर दैट ओनली कॉम्पिटेंट एंड रिस्पांसिबल इंडिविजुअल्स आर इंटरेस्टेड विथ द लीडरशिप पोजिशन तो एमती नुहे जे क्या गोटे लोक को उठे तुम डायरेक्टर करदेव तार किसी एलिजिबिलिटी थी दरकार कौन एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर बी ए नेचुरल पर्सन माने कंपनी इज ए लीगल पर्सन इट्स ए कॉर्पोरेट एंटिटी इट्स ए फर्म बट नेचुरल पर्सन वी आर ह्यूमन्स एंड नेचुरल पर्सन्स तो से ही ह्यूमन्स मैंने ही डायरेक्टर हो पारे ए कंपनी कैन नॉट बी ए डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी देन मिनिमम 18 इयर्स हाँ वैलिड डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और DIN गोटे थी नॉट डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट माने ही न 164 में आगू देखिए देन हूँ must be mentally sound and solvent individual who have been convicted of fraud or sentenced to imprisonment more than 6 months typically disqualified from holding this position अरे ये तो ताहले तब टिपिकली नॉट इन एवरी केस बट टिपिकली से लगुच तमने सब केस रे नॉट एप्लिकेबल मे बी जति तंगर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ही कन्विक्टेड ही फॉर मोर देन 6 months ही भी डायरेक्टर देन होची नेशनलिटी एंड रेसिडेंसी रिक्वायरमेंट there are no nationality restrictions foreign national can also be a director in an Indian company however every company must have at least one resident director a person who has stayed in India for at least 182 days during the previous calendar year तमने यदि ए वर्ष तुम हिसाब कर whether you are eligible to be a director or not previous calendar year जोटा तमें से कैलेंडर ईयर मिनिमम 162 डे इंडिया रे रही देन यू विल बी कंसिडर्ड एज ए रेसिडेंट डायरेक्टर तुम कहली प्राइवेट कंपनी में भी मिनिमम 2 जन लोक थी दरकार डायरेक्टर होगा जड़े रेसिडेंट हो जड़े फरेन हेल्ले चल पार फरेन कहीं अलाउ कर बिकज टैलेंटा जो भी आसपारे फरेन लोक भी मे बी जब तुम अपॉइंट करा चाहो शेयर होल्डर्स वन कि गोटे फरेन लोक आसिक सी मे बी अधिका टैलेंटेड थी तो करू सी कंपनी तो इंडिया ना कंपनी इंडिया हेल्ले सी फरेन लोक इम्प्रूवमेंट कर इंडिया देन हूँ मिनिमम मैक्सिमम नंबर कौन यहाँ प्राइवेट कंपनी मिनिमम टू मैक्सिमम 15 कैन बी इनक्रीज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 मैक्सिमम 15 ओके तो डायरेक्टर रे हूँ पब्लिक कंपनी मिनिमम 3 मेंबर जो होचन मेंबर होचन 7 दैट्स ए डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफिस तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 15 तो मैक्सिमम 15 ऑफिस मैंने 1% कंपनी मिनिमम गोटे डायरेक्टर रही पारे और मैक्सिमम 15 रही पारे कि प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 15 रही पारे कि 15 रु आउरी चाहिए इनक्रीज हो पार नो रेस्ट्रिक्शंस ओके देन आसला कौन having the right mix of directors ensures not just compliance but also diversity in perspectives expertise which is critical to sound corporate governance या सब एक्सपर्टीज जिते रही बेटर गवर्नेंस करेंगे कंपनी ये भल चलो देन आसला टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स इन कंपनी प्रथम कहला ना मैनेजिंग डायरेक्टर और जहाँ MD कहा जाए Managing director plays a crucial role in the functions of a director, particularly in day-to-day operations of the company. Appointed by the board of directors and have the power to make decisions represent the company dealings with the third party. Usually जे MD थांती मैनेजिंग डायरेक्टर थांती से डायरेक्टर मानकर हेड गोटे टाइप थांती तांको किए अपॉइंट करे सही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तांको भितर थ्रू वोट करते रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ना MD oversees all business activities, ensures the implementation of company strategies, acts as a key decision maker in executing company policy. MD holds significant power to manage
डे टू डे अफेयर्स बट मस्ट act within the framework established by the board जहाँ अप्रूव करेंगे ता भितर ही एमडी करेंगे एमती मनईसा कम किसी कर देन आसले होल टाइम डायरेक्टर कौन is similar to MD but often focuses on specific areas of the business rather than the entire company's operations. Whole-time director is appointed at fixed term, typically responsible for one specific function such as finance, marketing or production. Company different area रहेला finance जिनसे मैनेज करिया जने whole time director appoint हेबे marketing आप ये करिया गोटे कंपनी marketing हेबे necessary ना कंपनी business केंती हबो production हला responsibility करना managing specific functions powers करना usually limited to a designated function जहाँ दिया होची then असले independent director कौन then they play a key role in ensuring transparency, integrity, fairness in company governance. These directors not involved in the company's daily operations but provide independent oversight and strategic guidance. Kono ensuring compliance with regulatory framework, protecting shareholders' interest, serving on key committees such as audit and remuneration. Power not involved in day-to-day management. Independent directors have significant influence in decision making, particularly matters of governance and policy. ये जो स्ट्रक्चरटा कराइछे तुम देखलो गोटे मैनेजिंग डायरेक्टर रहले जे कंपनी सब जिनस ओवरसाइट करेंगे देन रहा होल टाइम डायरेक्टर जी स्पेसिफिक जिनस आउटे माइन्यूटली देखिए जे एमडी रही से ऊपर ऊपर लेवल देखिए मे बी होल टाइम डायरेक्टर जी आसिक से मैनेजिंग डायरेक्टर कहे एमती एमती आम करुचु एमती आम ओवरसाइट करुचु देन मैनेजिंग डायरेक्टर जी अप्रूव करेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी बाहर देखिए जे एम सब ठीक ठाक कम कर कंपनी डायरेक्ट जेहेतु से मैंने कंपनी डायरेक्ट इनवल्व नहांती सो दे वोंट बी बायस्ड से ये जिनसा गोटे स्ट्रक्चरटा कराई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन ना कंपनी सब जिन ठीक ठाक कम कर लॉ मानिके कम कर सब जिन ठीक हो दे विल ओवरसेट दिस ओके देन आसले नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये कौन ना समवन हु डज नॉट टेक पार्ट इन द डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टिपिकली अपॉइंटेड फॉर देयर एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक एरियाज लाइक फाइनेंस मार्केटिंग और लॉ बड़ एक्सपर्ट होते से जिनसर गोटे डायरेक्टर पोजिशन दिखाई सो दैट it will be effective money in the management of the company. Now provide strategic direction, participating in decision making at board level and ensuring the company long term goals are met. Like financial background जो director होचंदी outside board of directors and direct कथावार्ता करुचंदी. So if the company is making a decision which is disastrous for the company in the long run, से direct सेठी तांकर कौन एक्सपर्टीजटा कहि परिबे ना rather than coming from an employee सेटा गोटे दूरर कथा हम गोटे असुविधा कथा हम टे कथाटा एत इफेक्टिव हेनी ग्राविटी रही गोटे नॉर्मल एम्प्लॉयर बट गोटे डायरेक्टर जदि से जिनसा कह दिस इज फाइनेंशियली बैड फॉर द कंपनी तो कथाटा अधिक रहा ओके देन आसले नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय स्पेसिफिक शेयर होल्डर और a group of shareholders to represent their interest. Usually the case when a company has significant investors who want to ensure their views are reflected company decision. Then as an alternate director appointed to act on behalf of a director who is unable to attend board meetings for an extended period. देह खराब पीछे कहीं से आसपास ना दी. Then as an additional director appointed between AGM annual general meeting and can hold office until next AGM. Where they must be ratified by shareholders, they can be appointed to address specific need on the board. जहाँ काम होइथो से अनुसार additional director appoint होबे. Then as roles and responsibilities of a director in India. कौन तांकर काम करेंगे आम एपर्त अधा जिन डिस्कसन कर सारे ये अथे भलसे देखा कौन इनश्योर कंप्लायंस कंपनीज एक्ट को कंप्लायंस कर प्रथम जिनस देखिए ड्यू डिलिजेंस कौन मस्ट एक्ट विथ केयर स्किल एंड डिलिजेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इंश्योरिंग डिसीजंस आर मेड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स शेयर होल्डर स्टेक होल्डर से काम कर टाटा तो लगुच ना टाटा क्या लगुच शेयर होल्डर्स को लगुच डायरेक्टर निजे में भी इन्वेस्टेड थे किंतु मेन टंकाटा तो शेयर होल्डर्स मान अच्छे ना तो सी जहाँ कम करेंगे प्रॉपरली भाभी चिंती करेंगे जमी कंपनी लॉस न हो ओके दैट इज व्हाट ड्यू डिलिजेंस इज फिड्यूशियरी ड्यूटी डायरेक्टर्स हैव फिड्यूशियरी ड्यूटी टू एक्ट इन गुड फेथ एंड विथ इंटेग्रिटी अवॉइडिंग एनी कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड इंश्योरिंग पर्सनल इंटरेस्ट डू नॉट इन्फ्लुएंस कंपनी डिसीजन देन असला फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी They must ensure companies' financial statements are accurate, comply with the accounting standards, safeguarding shareholder investments. Okay, ये होची तांकर responsibility. Powers and liabilities. कौन power अच्छे as well as तांकर liability कौन. But with power comes significant responsibilities.
strategic decision making power ତାଙ୍କର ଏୟା ରହିଲା one of the primary function director is make strategic decision for the company growth and sustainability financial oversight କରିବେ operational control କରିବେ company control କରିବେ appointment of key personnel ଯେମିତିକି CEO chief executive officer chief financial officer CTO ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି chief technical officer then delegation of authority ତାଙ୍କ authorityକୁ delegate କରିପାରନ୍ତି ओके लायबिलिटी कौन है पर्सनली लाइबल फॉर कंपनी डेट्स कंपनी डेट जार हो ही इज पर्सनली लाइबल फॉर दैट वायोलेसन ऑफ फिडुशियरी ड्यूटी कौन जब बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी काम करना देन पर्सनल लाइबिलिटी ऑल्सो लीड हम कौन नहीं पर जना पड़ा जे सी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी काम करना मे बी डायरेक्टर गोटे कंपनी संगे डील कर कंपनीटा को रिलेटिव रही और से डील कलाठू कंपनी बहुत बड़ा लॉस हो जाए देन सी कौन निज पर्सनल इंटरेस्ट काम कर लायबल किए रहा डायरेक्टर क्रिमिनाल लायबिलिटी कौन ना फ्रॉड जदि करेंगे फेल्यूर टू कंप्लाई विथ रेगुलेशंस नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एगुरा है क्रिमिनाल लायबिलिटी आसीज एगुरा मे भी सिविल लायबिलिटी यहाँ सिविल लायबिलिटी यहाँ भी सिविल लायबिलिटी बट यहाँ क्रिमिनाल लायबिलिटी एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉ वायोलेशन एनवायरमेंटल माने कंपनी तार जो ऑपरेशन कर गछ गछ कौटी काटिदेव किसी टॉक्सिक वेस्ट कौटी गोटे डंप करदेव एनवायरमेंटल लेबर लॉ माने जो मैंने अच्छा एम्प्लॉय अच्छा लेबरर अच्छा सिविल लायबिलिटी कौन अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी डायरेक्टर्स कैन ऑल्सो फेल सिविल लायबिलिटी फॉर एनी रॉन्गफुल एक्ट्स कमिटेड इन देयर रोल एज डायरेक्टर की ड्यूटीज कौन ना डायरेक्टर टू एक्ट इन गुड फेथ रे काम करेंगे ड्यू डिलिजेंस करेंगे ड्यूटी टू हैव कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ड्यूटी टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट से तैयारी कर इंटरेस्ट अच्छी से डिस्क्लोज करेंगे ड्यूटी टू एनश्योर कंप्लायंस कौन कंपनीज एक्ट कंप्लायंस तो ये हूँ डायरेक्टर काम यह हूँ देन इसलिए आम देखा कंपनी गोटे मिनिट अपॉइंटमेंट मोबाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखिले कॉन्स्टिट्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर माने ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर आम देखिले तांको ही कॉन्स्टिट्यूट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही थांती फुल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये सब देखिले दे कॉन्स्टिट्यूट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओके देन असला कौन मीटिंग्स काइंड्स प्रोसीजर रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग ओके तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग्स करना मेंबर्स मीटिंग्स डायरेक्टर्स मीटिंग्स अदर मीटिंग्स these meetings are carried on to attain different goals each meeting has its own distinct sets of rules and regulations the rules and regulations have to be abided by the company meetings have to be conducted in accordance with the such set meetings these meetings play a major role in decision making process of the company मु तुम कहली why companies meet डायरेक्टर मैंने कहीं मीट करेंगे मेंबर मैंने कहीं मीट करेंगे शेयर होल्डर मैंने कहीं मीट करेंगे कंपनी ना पास्ट जहाँ अफेयर से करी ठीक कर भूल कर डिस्कस करेंगे प्रेजेंटली कंपनी कौन चलती फ्यूचर गोल कौन यू जिनस करेंगे बर्तमान मीटिंग गोटे हवा को हेले सब मीटिंग करा अलग अलग रूल्स रेगुलेशन फॉलो करा पड़ो कौन रूल्स रेगुलेशन कौ मीटिंग कौन फॉलो करा पड़ो देखिए से कंपनी मीटिंग मीन्स टू और मोर इंडिविजुअल्स कमिंग टुगेदर टू कैरी आउट ए लेजिटिमेट बिजनेस और टेक डिसीजन ऑन द सेम like any other group of people flocking together for a particular purpose. Now, in order to carry out the business of a company properly, it becomes necessary for the directors, shareholders of the company to meet as often as necessary and to take unanimous decisions based on their viewpoints, discussions. Simply put, it is crucial for the company to hold meetings for the effective functioning of the company. Okay. Definition of the meeting किसी नहीं. In plain language, a company can be defined two or more individuals. Company meeting it okay two or more individuals coming together gathering or assembly either by prior notice or unanimous decision for discussing and carrying out some legitimate activities related to business prior notice थिबा unanimous discussion for discussing माने एकाठी डिसीजन नहीं कि हाँ हमें एकाठी हवा चलो carrying out some legitimate activities माने जहाँ भी मीटिंग में एजेंडा थिबा और बिजनेस रिलेटेड किसी कथबार्ता थिबा
A company meeting can be said to be a concurrence or a meeting of a quorum of members to carry out ordinary or special business, take decisions on important matters of the company. Company meeting कहीं हुए controlling the management, controlling the controlling the management functions of the company. कंपनी रा जो मैनेजमेंट फंक्शन अच्छी कंपनी जो मैनेजमेंट फंक्शन अच्छी से जिनसा करिया को मीटिंग हुए कंट्रोलिंग दी अफेयर्स ऑफ द कंपनी कंपनी कौन केमती काम चलो डे टू डे अफेयर्स हम फ्यूचर पॉलिसी कहली पास्ट पॉलिसीज एक्सपीरियंस ऑफ ए कंपनी कैन बी डिस्कस्ड न्यू फ्यूचर पॉलिसीज मैंने मीटिंग रे डिस्कस करेंगे डेफिनेशन किए कौन देइछंदी सर वर्सेस डॉस रे असेंबली ऑफ पीपल फॉर द लॉफुल पर्पस कमिंग टुगेदर एटलीस्ट 2% लॉफुल पर्पस अलग अलग डेफिनेशन देइछंदी एसेंस इन कॉन्टेक्स्ट विथ द अफर्मेशन डेफिनेशंस तो एठु कौन ना देयर मस्ट बी 2 और मोर इंडिविजुअल्स थिबे गोटे लोक निज सहित केमती मीटिंग करबो तो छोट हो बड़ हो बहुत बड़ हो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मीटिंग डेफिनेट प्लेस माने गोटे डेफिनेट स्पेस प्लेस दरकार आदर कंपनी हेड ऑफिस बा से कौटी को होटेल रे कले बा कौटी को फॉरेन रे कले व्हाट एवर बट डेफिनेट प्लेस थिबा दरकार फिक्स टाइम एंड डेट हिथवा दरकार डिस्कशन कौन किसी गोटे डिस्कशन तो एकाठी हे ना इंडिविजुअल्स इन द मीटिंग मस्ट पुट फॉर देयर व्यू पॉइंट्स ओपिनियंस एंड एजेंडा ऑफ द मीटिंग माने कौन गोटे मीटिंग जब होची मीटिंग कौ रिगार्डिंग डिस्कसन हम से आगुरी समस्त को जनाई था मीटिंग डिस्कसन कौन हम ना आम कंपनी ए वर्ष ये प्रॉफिट होमें से प्रॉफिट को डिविडेंड दिए कंपनी डिविडेंड केमती कौन दबा तो वी आर प्रपोजिंग कि आम पर शेयर हिसाब से गोटे शेयर होल्डर को 10 टका डिविडेंड दबा एटा एजेंडा लिखाई थो when the members will be coming for the meeting or when the directors will be coming for the meeting से कहे ना 10 टका देले भर जड़े धर कहला 10 टका देले अधिक हो विल गिव 9 रुपीज आज जन कहे ना 9 रुपीज बहुत कम हो विल गिव 11 रुपीज सेटा हूँ व्यू पॉइंट से दौरान प्री डिटरमिन टॉपिक्स कहले in the company meetings topics or subject matter of the meeting are already notified to participants so that they can come prepared with the viewpoints on the same यूजुअली यही हुए आगुरी जना जाए मीटिंग रे कौन डिस्कसन हबार अच्छी नुआ जिनस लेस डिस्कसन हुए कारण तुम्हें जदि कहली 10 टका डिसाइड हो तुम जब कह 9 टका दबाटा उचित 10 टका देले अधिका हो तुमको जस्टिफाई करा डेटा थी दरकार ना मे बी प्रीवियस क्वार्टर भी से प्रीवियस क्वार्टर प्रीवियस ईयर से अर्निंग ही थो से अर्निंग को बेसिस कर 10 टका डिविडेंड देला बेलू कंपनी बहुत फंड पड़ू तो तुम्हें से डेटा शो करेंगे ना सो यू हैव टू बी प्रिपेयर डिसीजन कौन डिसीजंस फॉर द एजेंडा आर जनरल टेकन इन द मीटिंग इटसेल्फ as getting to a conclusion in the main objective of the conducting of the meeting गोटे किसी जिनस कनक्लूजन पहुँचो जमी डिविडेंड विषय कहली सो से तुम कनक्लूजन कर हाँ डिविडेंड फाइनाली ये अप्रूव है that decision of binding on the members of the company irrespective of whether they were able to attend the meeting or not but present or not even if they agree or oppose the inference thus reached जोटा मेजोरिटी हम से हम तापर तुम यदि प्रेजेंट ना इट्स योर फॉल्ट तुम भी यहाँ आज जन क्या पठार थिला देन आसला मीटिंग टाइप्स कौन गोटे प्राइवेट मीटिंग पब्लिक मीटिंग इंटरनेशनल गोटे थाए तो मीटिंग विषय जनरल जिनस कौन जाना मीटिंग डज नॉट टेक प्लेस ऑटोमेटिकली मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड कन्वीन्ड सिंपल वर्ड्स नोटिस हैज टू बी सेंड टू एवरी इंडिविजुअल विथ अथॉरिटी टू अटेंड मीटिंग जहाँ को मीटिंग अटेंड करा उचित से नोटिस जावा दरकार बट पब्लिक मीटिंग है जनरल पब्लिक इज नेसेसिटी एवरी टाइप ऑफ मीटिंग हैज इट्स ओन प्रोसीजर टू बी फॉलो एक्सीडेंटल मीटिंग of 2 or more individuals should not be referred to as a meeting माने दी जन डायरेक्टर जदि गोटे डायरेक्टर जाइए ना बुलिया को कौटी सिंगापुर थर जाइए आउ गोटे डायरेक्टर भी से सिंगापुर बुलिया जाइए दी जन देखा गले से मीटिंग नुह बट जदि से आगुरी नोटिस देकी को जाकि सिंगापुर जाकि गोटे होटेल कौटी गोटे टाइम डेट फिक्स हो होटेल आम सिंगापुर देखा आम ये जिनस डिस्कसन हम देन दैट विल बी कॉल्ड एज मीटिंग The secretary is responsible calling informing the members of the conducting of the meeting company secretary जो मन था से appoint कराई था they are responsible for this importance of the company meeting कौन
इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इन द कंपनी कंपनी कौन चेंज करार अच्छी जेन तुम कहती इफ द कंपनी इज डूइंग सॉफ्टवेयर बिजनेस एंड कंपनी एक्सपांड करने चाहिए रिटेल बिजनेस को मीटिंग हम डिसीजन मेकिंग हम improves the relation between employer and its employees. Further, following are some noteworthy pointers on the importance of holding a company meeting. Meeting are crucial when managing the company. Consent of the members of the company मिलिବ mistake जदि हवा board of directors shareholders have the authority to rectify the meeting of the company. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी डिसीजन नहीं जोटा कि भूल शेयर होल्डर मैंने भावुं से मीटिंग जोटार हम से रेक्टिफाई करेंगे शेयर होल्डर्स मीटिंग आर हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स टू गिव ए फाइनल से ऑन द डिसीजन मेजर्स टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स यह कहीदेले सब तो माने नहीं से सब जिन चलो मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कथा मोस्ट ऑफ द केस चलो कारण कंपनी डे टू डे अफेयर कर शेयर होल्डर्स मैंने सब आसपारे ना जमी लेट्स से फॉर एग्जांपल I hold the share of Reliance Industries. Okay. Actually मैं कहूँ I hold the share of Reliance Industries. माने स्टॉक ब्रोकर मोर जोटा मु यूज करे सेथिरे आई एम होल्डिंग कंपनी ना कहबो शेयर होल्डर माने मीटिंग होची यू कम एंड रेक्टिफाई द डिसीजन ऑफ द बोर्ड मुझे नोटिसटा में भी मोर मेल रे आस्थिबो मैं देखी छी मुझे टेक पैट करियोनी मोर एत मुंड बिंदु ने रिलायंस कोन करछु कोन नै बट जदि मु देखियो रिलायंस इज डूइंग समथिंग बिकॉज मोर मुंड केते बिंदु जदि आई एम ए बिग शेयर होल्डर इन द रिलायंस इंडस्ट्रीज I may be holding few shares of the Reliance Industries. It does not matter ऐसे कौन डिसीजन कर बट यदि मुझे रिलायंस ना 10% होल्ड कर व्हाट एवर डिसीजन दे आर टेकिंग विल अफेक्ट मी मोर प्रॉफिट लॉस अफेक्ट कर मो मुंड हजारे बिंधिब तो मुझे टेक पैट कर कहबी नहीं दिस इज व्हाट द डायरेक्टर्स हैव डिसाइडेड इज रॉन्ग वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस मे बी मो जिन को जो मैंने एग्री करते शेयर होल्डर्स मैंने मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इफ दे एग्री विथ मी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन नहीं से चलबनी मे बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो डिसीजन नहीं मे बी इट वुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी और तांको निज बेनिफिट भी नहीं थी पारती डिपेंड करे सेटा शेयर होल्डर मैंने रेक्टिफाई करेंगे देन कौन ना कंपोनेंट्स ऑफ ए वैलिड कंपनी मीटिंग वैलिड हवा को कौन कौन से थिबा दरकार पार्टिसिपेंट्स माने प्राइवेट मीटिंग ओनली इंडिविजुअल्स हैविंग द अथॉरिटी टू अटेंड द मीटिंग जे कि डायरेक्टर हेले कौन हेले जहाँ को डकाई थो कंपनी रा अफेयर ऊपर डिपेंड करे कंपनी केमती को मीटिंग कन्वीन करछे बट इन कंप्लायंस विथ द कंपनीज एक्ट ऑलवेज मन इच्छा कर पारबेनी इन कंप्लायंस विथ द कंपनीज एक्ट देन तांकर धर 5 जन डायरेक्टर अच्छन 5 जन डायरेक्टर आसीबे तांकर धर 10 जन डायरेक्टर अच्छन 10 जन डायरेक्टर आसीबे बट इन कंप्लायंस विथ द कंपनीज एक्ट चेयरमैन कौन ना गोटे मीटिंग रो चेयरमैन जने रहिबे सेक्रेटरी जने रहिबे तांकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कमिटी सब कमिटी एति शुरू करबे इनवाइटीज कौन ना जे इनवाइट करंती तांको अटेंड करायो प्रेस रिपोर्टर एमानी मटेरियल अरेंजमेंट कौन ना सिटिंग अरेंजमेंट केमती हबो मटेरियल्स फॉर राइटिंग देखा दरकार जनरल प्रोविजंस टू नो अबाउट कंडक्टिंग वैलिड कंपनी मीटिंग प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वीन मीटिंग माने कंपनी मीटिंग के डाक परिबे called by a proper authority like the board of directors in a valid board meeting decision to convene a general meeting and issue a notice in this regard must be taken by passing a resolution तो तमे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आगे मीट कले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट करी से कहबे हम जनरल मीटिंग कॉल करिवा जनरल मीटिंग कॉल करिया नोटिसटा जो इश्यू हो से नोटिसटा इश्यू आ पूर्व कोना उठे रेजोल्यूशन पास इथवा दरकार रेजोल्यूशन माने से माने से जो वोटिंग करिवे 50% अधिक हेले हेबे आ नोटिस इश्यू हो then hello notice for a meeting to be conducted by proper notice must be issued by the proper authority it means that such notice must be drafted properly according to provisions laid on the companies act से compliance सब रहिबो in the matters where companies act cannot dictate माने कंपनी रो अफेयर केंती डे टू डे अफेयर चलिबो कंपनीज एक्ट गोटे ओवरसाइट प्रोवाइड करतला गोटे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करतला यू कंप्लाई विथ दैट फ्रेमवर्क बट एते माइन्यूट जिनस कंपनीज एक्ट जाए तो कंपनीज एक्ट गोटे नोटिस रे देछि तमे कंपनीज एक्ट नोटिस ता देछि यू इंक्लूड दोस थिंग्स बट अपार्ट फ्रॉम दैट मे बी तमे एक्स्ट्रा जिनस भी इंक्लूड करि परिबो प्रोवाइडेड इट्स नॉट इलीगल सेटा कंपनीज एक्ट आउ को प्रोविजन को माने कोन उल्टा जाऊँ कंपनी एक्ट अलग को प्रोविजन अगेंस्ट जाऊँ देन यू कैन डू दैट बट मिनिमम यू हैव टू फॉलो इज कंपनीज एक्ट कोरम करना defined as the minimum number of members that are required to be present mentioned on the provisions of a particular meeting तो जो मीटिंग रे जते कोरम हिथवा सेति हिथवा दरकार
एजीएम जोटा तार एनुअल जनरल मीटिंग सेटा कोरम गोटे थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जोटा नॉर्मली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग गोटे थाए तार गोटे कोरम सेंटी मेंशन होइथो एजेंडा कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लिस्ट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड व्हाइल कंडक्टिंग द मीटिंग कौन डिस्कशन हबार अछि minutes the minutes of the meetings contains just an accurate summary of the proceedings of the meetings. Minutes of the meetings have to be prepared and signed within 30 days of the conclusion of the meeting. Further, the minutes book must be kept at the register office of company given their approval. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो अप्रुवल देते हैं माइनट्स को ना मीटिंग में कौन डिस्कसन है जस्ट एंड एक्यूरेट माने इनफ नॉट अननेसेसरी थिंग बट इनफ एंड एक्यूरेट माने ठीक ठाक जहाँ डिस्कसन कर ठीक ठाक रही इनफ रही proxy कौन ना used to refer to a person who chosen by a shareholder of a company to represent him at AGM of a company. 1000 जन shareholder अछंती they cannot go and attend the meeting. They will choose a person who will go and attend on their behalf. Resolution कौन ना between transactions and company meeting carried out in the form of resolution. Two kinds of resolution कौन ना ordinary special. Types of company meetings कौन रहेला ना meetings of shareholders of the members. Shareholders are member of the company they are meeting. General meeting which is further divided into statutory general meeting, annual general meeting, extraordinary general meeting, class meeting, meeting of directors. Statutory meeting करना एतिके डिवाइड है चारटा. Okay. Then meeting of directors करना sorry statutory meeting पांचटा ये डिवाइड है. Meeting of directors is also statutory माने company is law रे देइछ. Companies Act. एतिके मीटिंग हवा दरकार statutory meeting EGM extraordinary general meeting class meeting meeting of directors एतिके पांच प्रकार हवा दरकार. मतलब meeting of directors पुनी अलग अलग कौन board of directors meeting committee of directors meeting other meetings categories करना ए दुटा हला पर other meeting categories कौन हला ना debenture holders meeting creditors and contributors meeting. shareholder meeting कौन करना जनरल मीटिंग क्लास मीटिंग. जनरल मीटिंग करना स्टैट्यूटरी मीटिंग. तो बिफोर द एनैक्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट द रिक्वायरमेंट्स लेड डाउन फॉर स्टैट्यूटरी मीटिंग एंड रिपोर्ट्स अंडर सेक्शन 165 वर लेजिट. हाउएवर आफ्टर दिस एनैक्टमेंट सेम हैज बीन ड्रॉप्ड. तो एटा स्टैट्यूटरी और रहलानी बट करूचंती आ. व्हाट इज अ स्टैट्यूटरी मीटिंग इज अ टाइप ऑफ जनरल मीटिंग दैट मस्ट बी हेल्ड by every company limited by shares and every company limited by guaranteed with share capital not less than a month or not more than 6 months from date it was incorporated. Private companies are exempt from conducting statutory meeting report known as the statutory report discussed by the directors of the company. So it a mandate है by companies act, that's why it's called statutory meeting. Which company do not need to conduct statutory meeting? Ki private company limited by guarantee having no share capital. Unlimited liability company, public company that was registered as a private company earlier, a company that has been deemed as a public company under section 43A. Maybe এটা कौन गोटे 43A ଦେଇଥିବ जोटा होची तमरा deemed a private company a public company. अच्छा जैसे कुछ पब्लिक कंपनी को गोटे प्राइवेट कंपनी हिसाब से धरा जाइथिबा तांकर किछटा क्राइटेरिया अछि दैट मीट दैट क्राइटेरिया. We don't need to know what the criteria is.
बट से पब्लिक कंपनी होते पब्लिक कंपनी कहला जे से मैंने स्टैट्यूटरी मीटिंग करा दरकार बट प्राइवेट कंपनी हिसाब से डीम करा ଏବେ statutory report କ'ଣ board of directors is obliged to forward a report known as statutory report at least 21 days before the date of statutory meeting. Copy of the report is to be forwarded to the registrar for registration. ROC जो मैंने रोचन कंपनी रजिस्टर ऑफ कंपनीज ये डिटेल एक्चुअली तुम नहीं जब पढ़ यदि पढ़ीद सिलेबस नहीं पढ़ बट ये नहीं तुम कारण मीटिंग्स काइंड्स प्रोसीजर रिक्विजिट ऑफ ए वैलिड मीटिंग थिला देन रिजोल्यूशन एंड काइंड्स ऑफ रिजोल्यूशन AGM है annual general meeting is defined under section 96 of the Companies Act. Annual general meeting is one of the general meetings held once a year. As per section 96, all companies have to hold AGM within stipulated time. AGM provides chance for the members of the company to review the workings of the company and express their opinion on management practice of the company. Purpose kona consideration of financial statement reports from directors, auditors, making decisions on dividends, appointing a replacement director, directors in place of those who have retired, appointing, setting of amount of remuneration for auditors of the company, annual reports, special reports, audits. Importance kona affairs of the company discuss kariba, business of the company, accounts of the company or सब discussion by. The rules for conducting AGM meeting must be conducted on annual basis. Maximum duration 15 months is permitted between holding 2 AGM. मैंने गोटे एजीएम हूँ नेक्स्ट एजीएमटा नेक्स्ट 15 मास भितर हवा दरकार आनुआल मैंने नुहे जे 12 मास से हूँ जब 12 मास न हो पाला मैक्सिमम 15 मास भितर नेक्स्ट एजीएम होता दरकार मीटिंग मस्ट बी कंडक्टेड विदिन 6 मंथ्स ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट कंपनी गोटे बैलेंस शीट प्रिपेयर हुए ये प्रिपेयर होबार 6 मास भितर होता दरकार नोटिस कौन कंपनी हैज टू सेंड ए क्लियर 21 days notice to the members to conduct AGM must mention date, location of the meeting, along with the hour it is decided to be held. All the members of the company, including legal representatives of deceased members, assignee, insolvent members, statutory auditors, company, all directors of the company को AGM notice देगा. Date, time, place conducting AGM कहले एटा first AGM and relaxation. As per section 96 कौन होची a general meeting must be held annually as the name suggests. Mandatory company regular intervals. AGM meeting is held for the first time after company incorporation. It has to be held within a period of 9 months from the date of closing of the financial year of the company. In all other cases, within 6 months from the date of the closing of the financial years. और प्रथम जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन होची तापर जो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग हम जोटा ये जानछ तुम मार्च 31 रे क्लोज हुए तार 9 मास भीतर तुम फर्स्ट एजीएम करियो नेक्स्ट कौन ना तापर जो एजीएम तुम करार अच्छी नेक्स्ट मार्च मसरू 6 मास भीतर तुम एजीएम करार अच्छी Then coach, as per section 96, a company has no obligation to hold any AGM until it holds the first annual general meeting. If such relaxation is provided so the company set up its final reports for longer duration. Another provision provided under section 166(1) is that with proper authorization from the registrar, company can postpone the date of AGM. ROC जी अच्छी से यदि authorization दौरान तुम्हें फर्स्ट AGM कला पूर्व तुम मे बी 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नहीं पार आरओसी किंतु दबा दरकार किंतु फास्ट कलापर तुमको प्रॉपर ये चलिए पड़े फास्टा जब कल तापर 6 मास 6 मास मैंने फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 6 मास भर तुमको करा पड़े रजिस्टर हैज अथॉरिटी टू पोस्टपोन डेट फॉर फर्दर 3 months at the most. However, such relaxation does not apply to the case of a company's first AGM. First AGM रे a relaxation apply happen. Further, company may not hold AGM meeting in a year provided the registrar has consent to it. However, justification for extension will be reasonable. तो किसटा पावर होची गैप्स कौन होची must not exceed 15 months. Section 210 acts as company must provide reports on accounts of profits losses of the company. Company profit नहीं income expenditure report must be submitted. Quorum कौन public company रो 5 if the company has less than 1000 members. 15
जदि 1000 ରୁ 5000 30 नंबर एक्सीड 5000 एतिक मिनिमम मेंबर रहा दरकार गोटे मीटिंग चलने दैट इज व्हाट कोरम इज प्राइवेट कंपनी कौन ना ओनली 2 members were present will constitute the quorum 2 जन मिनिमम हेले प्राइवेट पब्लिक कंपनी ना ये सब रिक्वायरमेंट अच्छे proxy कौन ना a member of a company who has the authority to vote at a meeting will be entitled to appoint a proxy जाई पारले proxy appoint करिवो procedure to be followed after conducting the AGM and penalty if the company fails after conducting the AGM report in form गोटे एटा MTG अच्छे under section 121 report will include the meeting convened held conducted as per provision 2039 penalty for not holding an AGM कौन section 99 ने penalty देइछि serious offense in the eyes of law every member जे fault है deemed to be defaulter a fine extendable to कहते हैं 1 lakh may be levied on the defaulters moreover as per section 99 default persists 96 97 ना comply न होची 5000 will impose on defaulter and the problem continues per day बधे 5000 per day इथियो NCLT का पावर कौन रहला नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल commonly known as NCLT authority to call or direct a meeting under section 97 यदि कंपनी मीटिंग करनी नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल करिवे किए करियो शेयर होल्डर ने अप्लाई करिवे by the members in matters relating failure to conduct a meeting then is like AGM or EGM in a company there are certain matters that are so crucial to be discussed that they need to be addressed immediately to the members AGM टा per yearly होची बा maximum 15 मासर ड्यूरेशन हवा दरकार EGM करना extraordinary और immediately दरकार so extraordinary general meeting comes into play discussed under section 100 of the EGM meeting is a general meeting apart from statutory meeting कौन AGM annual general meeting or any adjournment meeting such meeting is held discuss special business especially those business that do not fall under the ordinary business that are discussed at AGM ने जहाँ discussion होची EGM ने कौन ना अलग जिनसा discussion होगा तो immediately कौन दरकार थी वो discuss होगा such meeting are usually called for matters urgent and those cannot be discussed at EGM called by following directors of the board of directors shareholders of the company who hold 1/10 of the paid up shares 1/10 of the paid up shares कंपनी ना पेड अप शेयर कैपिटल जोटा थी तार 1/10 जे होल्ड कर सी भी EGM डाक परियो कॉल केनती हबो one might wonder by whom EGM is called by following substance by board of director निजे डाक परिवे by board on the requisition of member जदि requisition करिवे कि 1/10 जेटा होल्ड करते पेड अप सी जे 1/10 होल्ड कर नथो किंतु वोटिंग राइट तार थिबो रिक्विजिशनिस्ट किए एटा तमरा जनरल नाही तो देखियो ट्राइब्यूनल केतले कर परिवे ने सेक्शन 98 if it is not possible to conduct a meeting in the company tribunal may either so much or through an application submitted by a director or member of the company who has the authority to vote at a meeting instruct to hold a meeting in a manner of tribunal thinks fit provide ancillary or consequential instruction as the tribunal deems including any directive thus amending the supplementary matters related to it ये जिनसा कहीं हो NCLT कहीं मीटिंग कॉल कर पा मे बी डायरेक्टर भितर पड़ूनी डायरेक्टर जो मैंने अपॉइंट होती बड़ बड़ एक्सपर्टिज लोक ना सी गोटे डायरेक्टर कहूँ मोर बहुत नॉलेज अच्छे कंपनी एमती चलो ना आ गए डायरेक्टर कहूँ मोर बहुत नॉलेज अच्छे कंपनी एम चलो भर डिस्प्यूट हो मीटिंग कॉल पर हो पार न देन तापर कौन NCLT ये कर बाध्य कर तुम कर जहाँ भी हो प्लेस आसला नोटिस सेमती दब पेनाल्टी अच्छी सेमती जमी AGM देन आसला क्लास मीटिंग जोटा क्लास मीटिंग कौन गोटे जनरल मीटिंग गोटे क्लास मीटिंग are meetings conducted for shareholders of the company that hold a particular class of such shares. Such a meeting is conducted to pass a resolution that is binding only on the members of the concerned class. Only members belonging to that particular class of shares have the right to attend both the meeting. Usually voting rules are applicable to class meeting as they govern voting and general meetings. Such class meetings can be conducted whenever there is need to alter or change the rights of privileges of that class stated in the articles of association. In order to execute such changes, crucial that amending provisions separate meetings of the shareholders separated by passing a special resolution. It has a class meeting. Board of Director meeting as per section 173. Company has to hold meeting of board of directors following case. First board meeting has to be conducted within span of 30 days from the date of incorporation. Board of incorporation है board of director appoint है
30 दिन ଭିତରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମାନେ ମିଟିଂ କରିବେ। In addition to the above meeting, every company has to hold a minimum 4 board meetings annually. There shall not be a gap of more than 120 days between two consecutive meetings. So minimum 120 ଦିନରେ ଥରେ ଏକାଠି ହେବା ଦରକାର, ବର୍ଷକୁ minimum 4 ଥର ହେଉଥିବା ଦରକାର। Purpose କ'ଣ? For issuing shares and debentures କହିଲି, dividend shares debentures ସେମାନେ approve କରିବେ, making calls on shares, forfeiting shares, transferring shares, fixing rate of dividend, taking loans in addition to debentures, making an investment in wealth of the company, pondering over the difficulties of the company, making decision on policies of the company. Board meeting ମାନେ board of directors का meeting ହେଲେ notice କେମିତି ଦେବ? डायरेक्टर ମାନେ meeting କେମିତି join କରିବେ ନା in person अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी join କରିପାରିବେ और अदर ऑडियो विजुअल मीन्सରେ ବି ସେମାନେ join କରିପାରିବେ। Agenda କ'ଣ? Can be described as thing to be done in case of a company meeting, can be said to be statement of the business, must be transacted in meeting along with other the business must be dealt with. Agenda ବୋଧେ ନାହିଁ ତମର ଇଏରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସର୍ଟ ଜାଣ କୋରମ୍ ସେମିତି ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଲି। କମିଟି ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ କିଏ? डिबेंचर होल्डर मीटिंग ସେମିତି, କ୍ରେଡିଟର୍ସ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହେଉଛି, ନୋଟିସ୍ ଅଫ୍ ମିଟିଂ ପ୍ରୋସିଜିଓର। ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ନୋଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଇଦେଇଛି, ନ ପଢ଼ିଲେ ବି ଚଳିବ। ଏଗୁଡ଼ା ଇଜିଏମ୍ର କେସ୍ ସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି, ଇଜିଏମ୍ର କେସ୍ କେତେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବୋର୍ଡ଼ ମିଟିଂର ସବୁ ନୋଟିସ୍ ଟୁ ମିଟିଂର ସବୁ କେସ୍ ଦେଇଛି। ଏଗୁଡ଼ା କେସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଉଠିଥିବ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ସେଇ କେସ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଇଥିବ। କୋରମ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିଟିଂରେ ସେମିତି ହେଲା, ଭୋଟିଂରେ ହେଲା, ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଦ କମ୍ପାନୀ ଏଇଟା ତୁମର ଅଛି। କ'ଣ? In the complex framework of Companies Act, resolution plays a crucial role in the decision-making process of the Companies Act. Any decision made by the company through a resolution ensures that this decision complies with the law and the company must adhere to all rules established through resolution. Resolution refers a decision made by the company members and directors by voting, a formal expression of their opinion, or by a will. According to Companies Act, there are two types of resolution: member resolutions, director resolutions. Member resolutions have been further categorized into ordinary and special resolution. A resolution is a written document created by board of directors of a company. Board of directors is a group of persons who act as the governing body of a company on behalf of the shareholders. Board of directors created a proposal for resolution, presented this proposal in front of shareholder in the meeting, and the shareholders gave approval for this proposal. That resolution was passed by the company. Resolution is legally binding decision of the company. Resolution ମାନେ ହେଉଛି ଯାହା ବି କମ୍ପାନୀର ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିବାକୁ ହଉ, କମ୍ପାନୀର କିଛି ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ହଉ, କମ୍ପାନୀର ଯେମିତି କହିଲେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିଜନେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ରିଟେଲ୍ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ହଉ, ଯାହା ବି କରିବାକୁ ହଉ କମ୍ପାନୀ ଚେଞ୍ଜେସ୍ରେ, ସେଇଟା ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେନ୍ ପାସ୍ ହେବା ଦରକାର। ଇଟ୍ସ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମାନେ ତୁମେ ଯେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଉଛି, ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇକି ଆକ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମିତି ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ସେମିତି ପାସ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ମିନିଂ ପଢ଼ିଲେ, Directors of a company have the crucial power to run the company. All board members are appointed by the shareholders of the company. They give power to the board of directors to take an important decision regarding the company. What we are basically doing in a democratic form of government, voters are giving powers by giving votes to their electing representatives. Those representatives are going to the parliament or legislative assembly and taking the decision. Similar idea hochi. Company is also a democratic type of democratic government. Passing board resolutions. As per Companies Act 2013, a board resolution is an official document of a company that formalizes the decision of a board members that take in the board meeting of a company. Section 179 3C କ'ଣ କହିଲା, board of directors can issue securities, which means they can issue new shares, debentures of the company passing a board resolution. କରିପାରିବେ, କ'ଣ କରିପାରିବେ ଏଠି ଦେଲା 174 କ'ଣ କହିଲା ନା, ପାସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ କମ୍ପାନୀ ମଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ୍ କୋରମ୍ ଇନ୍ ଦ ମିଟିଂ। କୋରମ୍ କେତେ କ'ଣ ହେବ ସେଇଟା ତୁମେ ଦେଖିଲ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମିନିମମ୍ 2 ହେଲେ ହେବ, ପବ୍ଲିକ୍ କମ୍ପାନୀରେ ମେମ୍ବର ଅନୁସାରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଛି। In a board meeting for any proposal, if the members give equal numbers of votes, chairperson voting plays an important role in passing the board resolution. 50+1 ମାନେ 50% +1 ହେବା ଦରକାର। ସେ
से चेयरमैन जे रुहति चेयरमैन ऑफ द माने मीटिंग जन अपॉइंट करते तांको वोटटा क्रुशियल डिसाइडिंग हुए 170 ले कौन कहला every director must get prior notice of the meeting and in that notice they must know they can participate in the decision making process of the company 118 ने कहला recording minutes of every posting of every meeting must be maintained passing by circulation कौन ना 173 कहला every company must conduct 4 board meetings in the year in a board meeting director conducts discussion and reviews the company's performance solves company policy issues discusses any topic related to company growth directors are participating in the manner either in person or through audio conference means ताको एटा दिया हिची जेमती भी तम participate कर परियो in a board meeting directors give their opinion on resolution to decide particular matters normally resolutions are passed at a meeting for a specific matter the company passes a special or ordinary resolution otherwise board resolution is passed by circulation of all matters by the company सब matter एकाथरे resolution pass हेक हबो special matter special resolution रे हबो okay as per Companies Act 2013 section 175 provides provision for the board to pass resolution by circulation प्रोसीजर कौन देला बाय सर्कुलेशन पास करिया को एटा गोटे रूल से माने काढी चंती टू एक्ट सेक्शन 175 एक्ट अंडर कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स रूल 2014 विथ सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स 1 केमती कोन तमे सर्कुलेट करी पास करिवो सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन सेटा बोर्ड रेजोल्यूशन दा मेंबर्स रेजोल्यूशन 101 रे कहला कोन circulation of a member resolution is a resolution that is authorized by circulation among the members of the company. This resolution is passed when there is an urgent situation and there is no requirement for conducting the board meeting. Company members who are eligible to call for AGM can take part in the company activity. कौन गाइडलाइन है मेंबर रेजोल्यूशन कौन पे से मैंने कराती डायरेक्टर अपॉइंट करिया को अल्टरेशन ऑफ एमओए एओए करिया को वॉलंटरी वाइंडिंग अप करिया को कंपनी से मैंने एंड करिया चाहउछंती रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी चेंज करिया चाहउछंती टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन कौन दिला ordinary resolution which are used for regular matters of the company and passing its resolution simple majority vote special resolution used for taking any crucial decision of a company for this resolution a higher number of votes for passing it is required board resolution is where board director decides in the board meeting of the company resolution covers various types of topics like decision of financial investment company or appointment director तीनटा हैला गोटे हैला ordinary resolution गोटे हैला special resolution गोटे हैला board resolution ऑर्डिनरी सिंपल मेजोरिटी स्पेशल रेजोल्यूशन अधिक लोक भोट देवा दरकार कि यहाँ कंपानी मे भी से लिखाई थो कंपानी एओए रे लिखाई थो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोर्ड रेजोल्यूशन से सिंपल मेजोरिटी देन आसला ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन कंपनी लॉ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज वन वे फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन विच ए प्रपोजल इज पास्ड व्हेन द नंबर ऑफ वोट्स इन फेवर ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन एग्जिस्ट दोज अगेंस्ट इट जते अगेंस्ट अछन तार माने अगेंस्ट जति in favor of association माने से 50+1 ही तमे जाना देन पास हो वोटर्स इंक्लूड्स डायरेक्टर शेयर होल्डर सब एटा होची ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन केंति पास हो मैटर्स रिक्वायरिंग सैंक्शन बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को मैटर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन ने तमे पास करि परिबो स्पेशल रेजोल्यूशन as per section 114(2) passing for in special resolution notice must be provided for calling a general meeting along with other important information regarding the special resolution to be eligible to voting special resolution जहाँ पास करार अच्छी तुम्हारा नोटिस से डाकियो ना कहले everyone who is coming to the meeting they can express their views on the meeting itself so they must be prepared ସେଥିପାଇଁ notice is mandatory and must be duly given to the members voters cast their vote in the meeting may show their hands using postal ballots on any electronic means that is acceptable by the company either हाथ देखिए करेंगे सेठी गणा जीव पोस्टल बैलेट मतलब बाय पोस्ट पठेबे और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भी आनी हबो A special resolution is distinct from ordinary resolution because the decision taken by special resolution has a major impact on the company's structure and legal status. This decision includes a change in the MOE of the company, reduction or increase in the share capital of the company, decision for merger or acquisition of other companies, and a decision for any voluntary winding up the company. एटा बड़ बड़ decision company सेटा special resolution निया जबा दरकार जोरा ordinary resolution छोट छोट मैटर से छोट छोट ये रे हिजबा रिक्वायरमेंट फॉर पासिंग एनी स्पेशल रेजोल्यूशन करना नोटिस हम कोरम एंड वोटिंग थी दरकार एट मोर देन 75% of total number of members of the company that
माने कौन प्रेजेंट अच्छा आउ भोट कर रूल्स रेगुलेशन माइन्यूट्स हम आर सी पुणी फाइलिंग हम कौन कौन जिनस स्पेशल रेजोल्यूशन हम ऊपर देखले कौन कौन जिन ऑर्डिनरी पास कर कौन कौन जिनस ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर तो यहाँ है रजिस्टर ऑफिस चेंज कराया एमओए चेंजेस कराया ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट एटा कौन ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट इज अलग कनसेप्ट एटा मान तुम मे भी कंपनीज एक्ट न कर डिपोजिटरी रिसिप्ट से गोटे टाइप गोटे लोन इंस्ट्रूमेंट गोटे थाए छाड़ ये सब देखा मैटर्स रिकॉर्डिंग सैंक्शन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन देखले डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड स्पेशल ये वैसे एक्स्ट्रा इनसो अच्छे और चाहिए देखिए ठीक है सलाह तुम्हारे रेजोल्यूशन काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन हो